Hello everyone. In this video, we are going to solve passage 2 of the CSE 2023 CSAT paper. Uh, if you have watched my first video, you have an idea that we are going to solve all the passage, most of the passage of CSAT through a technique which will take less time and easy to solve, which will be an easier way to solve the question. The technique I have explained in the first video. So if you have not watched the first video, before going to solve the passage 2, first go through the first video and then come to this video. You will be more able to understand. However, I am going to summarize. I am going to tell you the steps again, but वो उतना डिटेल में नहीं होगा. So I would suggest that कि आप वो वीडियो देख लो फिर यहाँ पे आना. So in summary, टेक्निक में 3 स्टेप थे. स्टेप 1, which is most important thing, that we are going to read the question and option, follow up the follow up question and the option of passage before reading the passage. And why we are going to do this? The reason is that we are going to eliminate those options which we think cannot be the answer. So आपका क्वेश्चन होगा कि ये पॉसिबल कैसे है कि बिना पैसेज पढ़े हुए आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे. इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि कुछ ऑप्शन जो यूपीएससी दे रहे हैं दैट कुड बी इजिली एलिमिनेटेड यूजिंग योर कॉमन सेंस एज वेल एज जीएस नॉलेज. इसका मैंने एग्जांपल पहले वाले वीडियो में दिया था केन बेतवा लिंक का. सिमिलर थिंग वी आर गोइंग टू डू इन पैसेज 2. सो मैं एक समरी में स्टेप बता देता हूँ. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, read the follow-up question and options of passage. इसी के स्टेप 2 में इसी का एक सब स्टेप है. We will classify the option into 2 criteria. One is the possible answer zone and other is the elimination zone. And how we are going to classify the option, we will see while solving the passage. Step 2 में we will read the passage. Step 3, reread the question and solve the passage. ये बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया स्टेप्स ताकि आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए. फॉर द डिटेल स्टेप्स please watch the first video. So we are, without wasting your time, we are going to solve the passage 2. So we are going to follow the step 1. Read the question paper. Which one of the following statements best reflects what is implied by the passage? We will underline the keyword also. Best reflects this keyword. ये नहीं कि अच्छा वाला, सबसे अच्छा वाला. तो we will read the option 1. First we will make a table. Possible answer zone, elimination zone. Okay. So option 1 is education system must be strengthened in rural areas. Whether it will come into the possible answer zone or elimination zone, first we will use the common sense. चीज सोचो, मैंने बोला कि रूरल में एजुकेशन से अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हैं. व्हाट विल बी योर कॉमन आंसर? एजुकेशन अच्छा कर दो. सिमिलर थिंग,
we are going to say education system must be strengthened in the rural areas. We don't know what is the passage about, whether it is about rural areas, urban areas, I don't know. But without reading the passage, if I am going to ask a question, how I'm going to give you a condition, a statement, actually a statement that there are many uneducated people in the rural areas. What will be your suggestion? Without going into Sarv Shiksha Abhiyan and all other, the most simple and common answer will be उनका education system अच्छा कर दो. So by going to that logic, this could be our answer. So option A will be come into possible answer zone. There are few things that you should keep in mind. Uh, in question like this, where they are saying that what is waste reflected by, see that whether it is a positive statement, broader. These things should be kept in mind while keeping any option in possible answer zone for these type of questions. I'm going to explain more this thing, and you will be able to better understand which options should be kept in the possible answer zone or elimination zone after solving mm, more passage. So I'm not going. So just forget about this. Just think about only use common sense and general GS knowledge to do this exercise. तो हम सेकंड ऑप्शन में आएंगे. Large scale and effective implementation of a skill development program is the need of hour. Anyone who is reading newspaper or have basic idea of GS knowledge or the government actions, our prime minister is always telling that a skill development, and also we have separate department formed in I think 2015 itself. So this is already happening in India. So this could be our answer. So I will keep this also in possible answer zone. Also, or another way of thinking, if you read the option, large scale and effective implementation of a skill development program is the need of hour. Similar to the analysis of option A, if I ask, unskillful workers are more in India. So what will be your answer? कि उनको अच्छा कर दूं, more skill लाना चाहिए सब. Similar common sense is provided for keeping the option B in possible answer zone. Now coming to the option C, for economic development, health and nutrition are only as nutrition of only skilled workers needs a special attention. Okay, let me give you an example. There's one boy Ram, and there's one another boy Syam. Syam is elder brother of Ram. Ram is not much skilled compared to Syam, or you can say Ram is unskilled and Syam is skilled. Mother gives nutritious food to Syam and not so nutritious food to Ram. Do you think is this possible condition in any family? I'm talking about most general case. Don't go for exception or any Bollywood movie. Simple. If I am there, I will say बहुत ही absurd thing है कि किसी को ज्यादा खाना दे रहे हैं, किसी को कम खाना दे रहे हैं. तो so this hardly happens in any family. Just take this example to India as a country. India being a democratic country, do you think is there any scheme or any policy where government of India will say, Madhsudan,
Government of India will say that Ram is unskilled, so provide less food, and Siam is more skilled, so provide more food. Do you think is it possible in any democratic country? Hardly, I think. In my opinion, it is not possible. And if you have any other opinion, you can comment in the video. Uh, okay, if you're not getting this by this also, let me give you another analogy. Let Ram is unskilled, okay, and policy is saying that since Ram is unskilled, we will provide less food. Now consider a situation. राम की पहली कंडीशन खराब थी, अनस्किल्ड था, उसको और लेस फूड दे दिए. इन फ्यूचर इफ यू वांट टू मेक हिम a skill, will he have that much stamina or strength to go for a skill workforce? जो बंदा पहले से उसकी हालत खराब है और अनस्किलफुल था, और अब आप बोल रहे हो कि मैं स्कीम ला रहा हूँ और आपको स्किल दिया जाएगा, बंदा बोलेगा पहले खाना तो आपने दिया ही नहीं. सो इफ एनी कंट्री हु वांट टू बिकम हु इज फ्यूचरिस्टिक, who wants to become a power in any country, will not go with this type of policy. So we will also keep this one in, we will keep this in elimination zone. Okay. Now coming to the option D, for rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. Simple. जो मैं अभी एनालॉजी दे रहा था कि कोई बंदा राम राम जो अनस्किल्ड थे उनका पहले ही खाना आप कम कर दिए और फिर बाद में बोलोगे स्किल दिया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है. सेम सिमिलर थिंग इज सेड इन द ऑप्शन डी. You can see it is saying for rapid economic growth, attention should be paid to health and nutrition of the people. Simple. अगर आपको अगर राम अभी अनस्किल्ड है और उसको अब इंडिया को अगर इकोनॉमिक पावर बनना है, तो राम को न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, एट द सेम टाइम स्किल भी देना पड़ेगा. सो इसलिए न्यूट्रिशन की बात कर, सिंपल है, ब्रॉडर टर्म है, पॉसिबल आंसर जोन में जा सकता है. ओके. Now coming to the now we will go to the step 2, where we will read the passage. Okay, before reading the passage, one benefit of reading the option and the question is that now I will concentrate on only those lines which will give answer to my question. We will not worry about other lines which are not related to the question of the passage. For example, if we are going to read the passage जहां पे ये आ जाए एजुकेशन सिस्टम के बारे में, रूरल एरियाज के बारे में, हमारे कान खड़े हो जाएंगे. लेट इट बी वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट, वी विल मोर फोकस. Where they are talking about nutrition and health for economic growth, we will be more constant, we will be more focused on that lines. अगर ये काम नहीं किए होते, we have to keep all these lines in our mind for answering the question. Or since there is a time constraint and also a pressure of exam, these things are not possible to keep whole lines in the passage और फिर अगला passage भी पढ़ना है. So it has reduced our मेहनत. That's it. So we will go to the step 2 and read the passage. Passage is, more than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. This is a fact about an India, a problem of Indian women and a quarter of Indian men कि वो सब anemia से suffer कर रहे हैं. If you have kept question in mind, this should be not our problem. These lines should not be kept in our mind. है नहीं. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof. This line
देयर वाज अ प्रॉब्लम, उसका इफेक्ट बता रहा है। ओके, सो I will not say don't pay attention to this, but pay less attention to this line. And why I'm saying to pay less, why I am going to say that why I'm not cutting this line, because it is talking about less productive term. And if you have read the question for economic growth, productivity is an important key term. So that's why we have not eliminated, we have not cut the line at one instance. We have kept this line. This might be useful in answering the question. So coming to the next line, India is also the largest tuberculosis burden in the world, costing itna work days to the country annually. Problem statement we don't need for our question paper, our question. Now coming to the next line, what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. See, हमने जब इस लाइन को अपने माइंड में रखा, सो ये वाला लाइन का मीनिंग इजी हो गया। Both are related, somewhat related. So we will keep this line also in our mind. Now coming to the next line, it is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. ये भी प्रोडक्टिविटी की बातें कर रहा है, मतलब सिंस इट इज सेइंग दैट कि प्रोडक्टिविटी लेस प्रोडक्टिव है, उसका एक एग्जांपल दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, ऐसे एग्जांपल आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। रिमेंबर, there is an option for a skilled workforce. So we will keep this line in our mind, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. Okay, before going to the step 3, remember one thing, this is a complex statement because we have put a comma, and can you just comment in the video what does this refers to in this line? Take some time and comment or think in your mind what does this refers in the passage. This refers to whole idea कि हमारा मलनर स्टूडेंट का प्रोडक्टिविटी कम होगा, ये होगा, वो होगा। द लाइन इज सेइंग कि एक इकोनॉमी जो स्किल्ड वर्कफोर्स पे डिपेंडेंट है, वो हेल्थ के बारे में इग्नोर नहीं कर सकता है, वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। एंड सेम थिंग इज हेयर द इट रिफर्स टू, किसको एड्रेस करना है हमें? मालनरिशमेंट को, ट्यूबरक्लोसिस बर्डन को, डिजीज के बर्डन को, ये सबको रिफर करना है। सो बी माइंडफुल while reading the complex statement and these terms, it, this, and think what does this or it refers to. Okay, now we will read the question in step 3. In step 3, remember one thing, first we will read the options which we have kept in elimination zone, and we cleared whether it should be eliminated or not after reading the passage. मतलब हम उसको कंफर्म कर रहे हैं कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन जोन में वो सच में एलिमिनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या पता हमारा कॉमन सेंस धोखा दे दिया हो या समथिंग अदर थिंग्स हैव कम इनटू आवर माइंड। सो वी विल फर्स्ट रीड द ऑप्शन सी बिकॉज यही एक ऑप्शन है जो एलिमिनेशन जोन में है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन
of only a skilled workers needs a special attention. अगर आपने पैसेज पढ़ा है, ये कहीं पे नहीं कहा गया है, तो कहीं ये बात ही नहीं कही गई है कहीं कि मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स। अगर आप ये लाइन पढ़ोगे, वो बोल रहे हैं कि ये वाली फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल, ये some might get confused option C with this one. This line is saying कि इकोनॉमी जो जैसे इंडियन इकोनॉमी जो है, वो उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। उसके लिए चैलेंज क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्कर्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ये यहाँ पे कभी नहीं कहा कि हमें सिर्फ उसको देना चाहिए, ये पैसेज कहीं नहीं बोल रहा है। सो जस्ट डोंट कंफ्यूज विथ दिस लाइन विथ दिस ऑप्शन। सो वी विल एलिमिनेट option C. I will change the color so that now coming to option A. Education system must be strengthened in rural areas. If you have read the passage, पैसेज में डिजीज की बात हो रही थी, उससे रिलेटेड प्रोडक्टिविटी की बात हो रही थी, उससे रिलेटेड फिर इंडिया का मतलब इकोनॉमी के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब इनको इस चीज को सॉल्व करने की बात करें। कहीं पे रूरल एरियाज एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही नहीं की गई थी, टोटली extra option A. So we will eliminate. Okay. Now coming to the option B. Large scale and effective implementation of a skill development is the need of the hour. जीएस के नॉलेज के अनुसार ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, बट जब हम पैसेज पढ़ लिए, पैसेज में तो क्या स्किल वर्कफोर्स की बात की है, बस वो बात की कि हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट है स्किल वर्कफोर्स पे, बट ये कभी नहीं कहा गया कि हमारे यहाँ अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा हैं, या हमारे यहाँ स्किल इंस्टीट्यूशंस कम हैं, या कुछ ऐसा चीजें, ये तो कभी कहा ही नहीं गया। पैसेज ओनली अबाउट टॉकिंग अबाउट डिजीज, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इसकी बात तो कहीं पैसेज ने नहीं कहा है। एंड इफ यू आर नॉट satisfied with my explanation, you can again read the passage and again see this option. ये स्टार्टिंग में कर सकते हो, so that you will get confidence in future passage. So this option is also eliminated. Now coming to the option D. For rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. अब देखो, पूरे पैसेज में न्यूट्रिशन और हेल्थ की तो बात की गई थी। malnourished चिल्ड्रन का, malnourished का एक बात किया गया था, malnourished malnourishment, सॉरी, हेल्थ में ट्यूबरक्लोसिस एनीमिया की बात की गई थी, और यहाँ malnourishment की बात की गई थी। ठीक है, ये तो बात कर ही रहा था पैसेज, और जीएस के अनुसार भी सही था, कॉमन सेंस के अनुसार भी सही था, और पैसेज के अनुसार सही था। तो मेन ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। I hope you have got the idea how to solve the passage. In the next video, we are going to solve passage 3. But before next video, try to solve the passage 3 with this knowledge. See whether it is happening or not. Okay. So that's it from my side. Thank you. Take care. Bye bye.